Hello everyone. Would you hear my voice? So let's start. Hello, my name is Gauri and I am currently working at CodeClause as a software engineer. So I recently passed out from DY Patil College and I am hereby today taking your webinar on web development. So it's a pleasure as we have here for this webinar, and I hope this webinar will be fulfilled with valuable lessons and discussion. So I hope you guys have some basic knowledge about web development. You guys have some basic knowledge. You must have basic knowledge about web development because okay, okay, okay. So shall we start? Okay, we start. So let me share my screen first. Okay. So would you guys know about web development? So web development means nothing but creating, building, and maintaining of website. Okay. So web means nothing but web pages or anything that work on internet. मतलब आप जो कुछ भी देखते हो इंटरनेट पे, suppose I'll take a website about uh, hello. Would you see my screen or would you only see PPT? Okay, let me check. So first I am taking W3 school website. यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो वेबसाइट है ये आपको इंटरनेट पे दिख रही है। इसका मतलब क्या है कि इंटरनेट पे जो कुछ भी वेब पेजेस आपको दिखते हैं विच इज नथिंग बट आपका ये वेब है। और डेवलपमेंट मीन्स नथिंग बट इसको क्रिएट करना फ्रॉम स्क्रैच। ओके, सो आप बेसिक वेब डेवलपमेंट करते हो उसको आप बोलते हो डेवलपमेंट। सो इट इंक्लूड्स CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप। ओके, सो HTML का इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। HTML मतलब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यूज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस, डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस. So let's take this website as this is the structure of website. Okay, so this is the logo, this is the navigation bar, this is search area, and this all is the website page. Website page is nothing but website structure. Okay, let's say let's take example about your home. Your home has room. So उस रूम में आप स्ट्रक्चर बताते हो कि कहाँ पे क्या होना चाहिए। तो दिस इज नथिंग बट HTML। स्केलेटन होता है एक, आप पूरा स्ट्रक्चर बनाते हो वेबसाइट का तो वो HTML होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम CSS देखेंगे, कास्केडिंग स्टाइल शीट। सो CSS मतलब आप रूम में कौन सा कलर देना चाहते हो, कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए, कौन सा कबर्ड मुझे कहाँ चाहिए, ये नथिंग बट CS मतलब उसकी पोजीशन, उसका कलर कैसा होना चाहिए, रूम को कौन सा कलर चाहिए। डिस्क्राइब हाउ HTML एलिमेंट्स आर डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। तो अगर ये वेबसाइट हम देखेंगे तो ये कितना बोल्ड होना चाहिए, ये सर्च टैग मुझे ऊपर नहीं, मुझे यहीं पे चाहिए, मुझे मिडल में चाहिए, ये मुझे लिंक चाहिए, ये मुझे नॉर्मल टेक्स्ट नहीं चाहिए। तो ये सब जो चीजें हैं, या फिर ये होवरिंग हो रहा है, ये टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है, तो ये सब कुछ जो काम है वो CSS करता है। ओके, सो इट कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस। अभी इसका मतलब क्या है कि अगर हमने एक फॉर्म बनाया है 4 पेजेस में, तो उस 4 पेजेस को अगर हमने सेम नाम का क्लास दे दिया, क्लास एक एट्रीब्यूट है, हम जब जब आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्लास एट्रीब्यूट क्या है। तो वो जो क्लास है, वो क्लास अगर हम 4 ही फॉर्म्स को देंगे तो वो फॉर्म को हम एक साथ स्टाइल कर सकते हैं। तो अभी स्टाइलिंग में भी 3 टाइप्स है।
inline css, internal and external css. So inline css means हम एक टैग लिखते हैं, h1 सपोज हमने टैग लिखा, तो इस टैग में हम ये स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट दिया है। तो अगर हमें कुछ नॉर्मल और शॉर्ट कुछ चीजें करनी है या कुछ छोटी छोटी चीजों के बारे में हमें अगर स्टाइलिंग करनी है तो हम ये यूज कर सकते हैं। सो इंटरनल css, so internal css nothing but use the style tag to write. ओके okay? मतलब हम स्टाइल ये जो टैग है ना वो यूज करते हैं, हम हेड के बाद भी यूज कर सकते हैं पर बॉडी के ये पहले यूज होता है, तो उसमें हम स्टाइलिंग दे सकते हैं। पर ये भी हम कभी कभार ही देते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम ये एक्सटर्नल css ही यूज करते हैं फॉर स्टाइलिंग। तो ये एक्सटर्नल css मतलब क्या होता है कि दूसरे में, मतलब फोल्डर में ही दूसरी फाइल बनाई जाती है स्टाइल डॉट सी एस एस नाम की, एंड वो यहाँ पे लिंक की जाती है आपके HTML फाइल में। सो दिस इज नथिंग बट एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल फाइल करंट HTML पेज में लिंक करना। ओके, सो जावास्क्रिप्ट, सो जावास्क्रिप्ट मतलब अब एग्जांपल लो फैन का, आपने आपके रूम में फैन लगाया है पर उसको फंक्शन ही नहीं दिया, फंक्शनलिटी ही नहीं दी है कुछ भी कि उसे ऑन करना है या ऑफ रहना है, तो वो वैसा नहीं चलेगा, हमें ऑन ऑफ करना पड़ता है फैन को। सो दिस इज नथिंग बट जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में वैलिडेशंस होते हैं, देन इंटरैक्टिव मैप्स होते हैं, ये सब कुछ चीजें जावास्क्रिप्ट में होती है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ जावास्क्रिप्ट। Then Bootstrap. We are coming to the Bootstrap. Bootstrap is a front-end framework for faster and easier web development. So it's free. It's free of cost. It's responsive. It facilitates to creation of responsiveness. So what is responsiveness? Let me tell you. So this is a website. This is the display of my laptop screen. Okay. But when I inspect this, then this will get smaller in size. So can you see? Okay. So this is nothing but responsiveness. Let me refresh this. Okay. So ये रिस्पॉन्सिवनेस होता है, मतलब आप कौन सा भी डिस्प्ले यूज करो, आपको उस डिस्प्ले के हिसाब से आपको वो जो वेबसाइट है वो दिखती है। ठीक है, ये देखो, ये जो बटन्स है, जब मैंने थोड़ा सा इसको, तो ये उसका स्ट्रक्चर वैसे वैसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे कम होता है। दिस इज नथिंग बट रिस्पॉन्सिवनेस, कि आपको मोबाइल में भी आपकी जो वेबसाइट है वो अच्छी तरीके से ही दिखे। दिस इज नथिंग बट responsiveness. Okay, so this is nothing but Bootstrap. We use Bootstrap for this purpose also, and inside the Bootstrap there are some available codes for navigation bar, for table, for buttons. So this is nothing but Bootstrap. हम Bootstrap उसी के लिए ही यूज करते हैं। बेसिक HTML टैग्स, सो हम थोड़ा सा इसके साथ कोडिंग भी करते हैं विद दिस टैग्स। Actually, I have some network issue. Okay, would you see my screen? Okay, so फर्स्ट विजुअल स्टूडियो कैसे डाउनलोड करते हैं मैं पहले वो बताती हूँ इन शॉर्ट। विजुअल स्टूडियो डाउनलोड पर जाना है आपको, देन आपको पहली ही लिंक मिलेगी, उसमें जाके आपको एक नॉर्मल विजुअल स्टूडियो की कम्युनिटी होती है वो डाउनलोड करोगे तभी चलेगा, या फिर नीचे का कुछ भी आप डाउनलोड करोगे तो विजुअल स्टूडियो डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो आपको मैं सिर्फ स्टेप्स बताती हूँ। तो यहाँ पे मेरा डाउनलोड शुरू हो गया, अब ऐसे आपको डाउनलोड करना है। ओके, so let's move ahead. I've already opened my Visual Studio. So I've created a file. First, I'll open a folder because I have already created a folder
because we have a time limit. So this is my, so I'll open it, and here you can see the image folder which is I have created for myself. So I'll creating a file which name as demo.html in this folder actually. Okay, so first हमारा first tag था head. So let's start with this. So so what I do over here is like nothing, but I'll just type shift and 1, and this exclamation mark is there. So I'll just click on it, and this boiler code is in front of us. So this is nothing but a boiler code, normal code, which is the every Visual Studio can provide. So this is nothing but HTML tag. यहाँ पे हम लैंग्वेज बताते हैं इंग्लिश, कि ब्राउजर को समझ में आना चाहिए कि आपकी लैंग्वेज क्या है. तो ब्राउजर को हम बता रहे हैं कि हम इंग्लिश लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं. So this is nothing but head tag. Head tag, we include all the links, all Bootstrap links, JS links, all our CSS links. This meta tag is nothing but data of data. So we can tell browser that this is the character set I want to use. I am using this character set UTF-8 for my browser. Then this name, viewport, content. This line is nothing but we can tell browser that this website should be responsive. And this is the title. This is the title. तो title हमेशा change करना चाहिए आपने किसी भी website का. So I'll give it as a demo. Body. Okay, so inside body we have created टाइटल हो गया, मेटा भी बॉडी. बॉडी में हमारा पूरा जो वेब कंटेंट होता है या वेब होता है वो सब हम उसमें इंक्लूड करते हैं. मतलब जो भी कुछ टैग होगा वो बॉडी में हम इंक्लूड करते हैं. लेट मी टेक अ पैराग्राफ टैग. पैराग्राफ टैग इज नथिंग बट टू डिफाइन whatever text you want to define or whatever text you want to write on your website. Hello everyone. This is my paragraph tag. So first of all, I want to tell you that install extension as a live server. So पहले मैंने यहाँ पे extension पे क्लिक किया है, then I'm go to the live server. यहाँ पे install का आपको बटन आता है, आप install कर लो इसे. यह हमें लाइव हमारा जो वेबसाइट है वो दिखाता है. तो अभी मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा था. तो आई जस्ट शो यू हाउ दिस वेबसाइट वर्क्स. आई जस्ट क्लिक right bottom menu as a go live, and this is our website. Oops, something went wrong. Okay, आई थिंक फोल्डर का कुछ इशू हुआ है. इमेजेस फोल्डर सिलेक्ट हुआ है मेरे से. क्विकली न्यू विंडो लेती हूँ. ओके, सो यहाँ पे हमारी फाइल ऑलरेडी आ चुकी है. I've run this go live. ठीक है, यहाँ पे आ गया हेलो एवरीवन. सो दिस इज नथिंग बट द हेड टैग, पैराग्राफ टैग. देन विल मूव अहेड टू द हेडिंग. हेडिंग मतलब हमें 6 हेडिंग्स प्रोवाइडेड है. H1, H2, H3, H4. Okay, so first we'll use H1, and I'll tell you the difference. What is the difference between them? Hello, this is H1. So H1 is nothing but a very large text you get in your website. Okay, I'll quickly add H2 over here. H3.
जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते हैं, लाइक H2 H4, उसका जो फॉन्ट है, इट्स फॉन्ट इज गेटिंग रिड्यूस्ड. ओके. H6 एक मेरे से ज्यादा हो. ओके, एंड वी कैन सी द डिफरेंस इन देम. दिखा. दिस टेक्स्ट विल गेट reduced in their size. तो अगर आप कुछ पैराग्राफ यूज कर रहे हो और आपको हर एक चीज की फॉन्ट साइज डिफाइन नहीं करनी है, तो आप ये टैग्स यूज कर सकते हो. ओके, देन नेक्स्ट टैग इज link tag. So link tag is nothing but to link to another page. So let me take Google. First I'll do about href. Okay. तो अभी मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जाके www.google.com, और मैं ये जो लिंक है वो कॉपी करके इधर पेस्ट करती हूँ. तो ये वहां पे आ गया होगा गूगल. ओके. तो इस पर अगर मैं क्लिक करती हूँ तो गूगल फॉर्म ओपन होता है. ओके, सो इट्स लाइक दैट. आई एम टेकिंग अनदर ए. ऐसे हम बहुत सारे एक्सटर्नल वेबसाइट्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं. Okay, then I'll create another file name as demo2. Okay, so demo2 is control all, copy and paste over here. So I'll just quickly change the name as demo2, and I'll just keep all this part deleted, and only this part will be shown to the user in demo2 file. Hello everyone from demo2. Okay, so demo2 भी मैं सेव करती हूँ. Then we'll go back, refresh, we'll go to the demo2 directly. Okay, first demo1 should be live. So demo2 से हम demo, oh, तो demo1 से हमें demo2 तक जाना था. मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ. Okay, so let's go to the live server and then quickly check. So Google अभी ये थोड़ा सा नाम में चेंज कर देती हूँ. Not Google, demo2. And then you will check here demo2 में जब मैंने क्लिक किया, ओहो लिंक बदली नहीं. I don't change the link, so that's why this error is occur. So I'll quickly add demo2.html over here and quickly, okay. से मिल नहीं रहा है, पर ऐसे हम फाइल्स को लिंक करते हैं एक दूसरे से. demo2 यहाँ पे है. तो demo2 में जब हम क्लिक करेंगे तो ये हेलो एवरीवन फ्रॉम demo2 दिखेगा. नाउ लेट्स मूव अहेड. ये आपको आगे जाके समझ में आएगा क्योंकि आगे हमें वही पेजेस लिंक करने हैं. So list tag is nothing but to create a list of elements. So which have two types, ordered list and unordered list. So I'll quickly give you example of list, ordered list. One, ऐसे भी कर सकते हैं.
or we can create like OL, li tag in between them. One. So let's see the output. So ordered list is nothing but to give the sequence, to give numbering to them. So if we can change 1, 2, 3 sequence, then our ordering is same. That is 1, 2, 3, 4. और हमारे जो क्या बोलते हैं लेट्स है वो सेम ही रहेंगे. तो यूएल टैग इज नथिंग बट और यूएल लिस्ट इज नथिंग बट टू अनऑर्डर्ड लिस्ट which is nothing but which is not ordered. It does not maintain any order. Okay, so let's see. It have bullet points, not 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 is nothing but to order of it. Okay, so let's move ahead. We have an image tag after that. IMG, SRC, and ALT. SRC is nothing but, I'll show you quickly that SRC dot slash. Dot slash is nothing but I'll go in another folder which is named as images. और images के अंदर में जो image1 file है, I'll choose that file and ALT should be image not found. So image not found, why I'll give ALT as image not found? Because if I'll give path wrong over here, then I don't get any type of images on the web page. So at that time, we should type some message to the user that image is not found, image is currently not working, etc., etc., and then we'll go ahead. So I'll have this image. Okay, but in some cases, if I write URL incorrect, then this message will be printed image not found. Okay, so this is the this is what ALT is working. So I hope you understand this image tag. Move ahead. Form tag. So form tag is nothing but we can create a form inside this tag. I mean, we can create login forms. Okay, we can create sign up form or any type of form in that inside this tag. So this label is nothing but मुझे कुछ तो form को name देना है. I'll give a name to the field. Let's say field. So then I'll use this tag. Input type is equal to text. Text is nothing but that text or that name attribute or name label should be accepting only text type of value. Okay, only taking text type of value. So moving ahead, we create another label and give that to for gender. Okay, it's gender. We'll create now radio button gender. Okay, so I'll give label over here and then I'll quickly type input type equal to radio. So I want radio button either female or either male. Name as a gender. Okay, ID is male because this toggle button is for male. Gender value is also male. Okay. Let's complete this and just copy this for female also. Okay, and quickly give label as a male. Okay, तो यहाँ पे gender तो same रहेगा female. Here is also female. Label not for female. Okay, let's check the output. Okay, so this toggle button is
here, either male, either female. So this is nothing but radio buttons. Okay, so this is nothing but the form we have created. So this is okay for basic tags are completed over here. So let's move ahead to the next बॉडी हुआ सब हुआ यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग का मतलब होता है स्क्रिप्ट टैग इज नथिंग बट टू वी कैन ऐड जेएस इनसाइड इट और वी कैन ऐड सम सोर्स जेएस सोर्स फाइल्स इनसाइड इट then div tag is nothing but you can get this from this slide as div means multiple parts, so we can use div tag for the multiple parts of a website. If we can create header, we can use div. We can create navigation bar, we can use div, and we can specify that div with class or id. So what is nothing but class? So class is nothing but the attribute which is mostly used to point a class in the style sheet. Means nothing but if we give, let me show you the example. Class कैसे देते हैं? Form. If I give class over here, file close हुआ. Let me quickly open the file. Yes. Okay, so I'll give class inside this form. Class is equal to forms. So this is nothing but class. We can give class to identify this particular element or this particular form. If we can create multiple forms in the same web page and we don't want to give same style for particular or all the forms, then we can use class to specify or to identify that form. Then id id attribute is nothing but to specify or specifies a unique id. Means id और क्लास में क्या डिफरेंस है, तो id को हम हैश से यूज करते हैं. सपोज मैंने अब यहाँ पे अगर स्टाइल लिखा और यहाँ पे अगर मैंने फॉर्म्स, ये क्लास है तो फॉर्म क्लास को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड इफ आई क्रिएट id, if I create id for this paragraph, id is equal to para, then we should specify that id using hash para. Okay, like this. So this is the difference between them, and id should be unique for each and every different element. So this is the main point in id and attribute, and this is the main difference. So semantic and non-semantic tags. So this is nothing but you can see easily the difference between these two, non-semantic and semantic. सो नॉन सिमेंटिक में हम ज्यादा डिव्स यूज करते हैं. हर एक सेक्शन के लिए हम डिव ही यूज कर रहे हैं, पर इन semantic HTML we use header tag, nav tag. This is advanced version of HTML, so we can use this. फर्क कुछ नहीं पड़ता है वेबसाइट में, बट जब SEO मतलब सर्च इंजन ऑर्गेनाइजेशन जब गूगल करती है तो ये वो यूज करते हैं, दैट हाउ वी कैन राइट वेबसाइट कोड and etc. So we can do this work today as a login and sign in button और एक नेविगेशन बार बनाएंगे. देन उसके बाद हम बनाएंगे लॉगिन पेज, उसका वैलिडेशन भी होगा, साइन अप पेज, एंड देन इट्स वैलिडेशन दैट इफ यू डू नॉट फुलफिल एनी ऑफ द एलिमेंट इन or any of the field should be empty, then the form will not submitted. Okay, let's make coding of it. Let's make a form.
Let's create a website index.html. So I'll use boiler code over here. So now coming to the Bootstrap, actually, how Bootstrap is used. So I'll quickly search Bootstrap over here, and you will find this official website of Bootstrap. So let's click on it. We need to mention CDN of Bootstrap into our website. So this will give Bootstrap functionalities and give responsiveness website, etc., etc. All these things are covered in this. So okay, so I'll add this links over here, and the script link is also included over here. So as you can see, I have imported this links over here. Now okay, इसके लिए okay, so we create index. तो आपको समझ में आएगा भी बूटस्ट्रैप का एक यूज होता है कि in bootstrap if we search navbar over here, nav, if we search nav or navbar, then we get multiple of navbars here, and we have ready-made code of it. Okay, so you can use any code, whatever you want to use. Then I'll quickly copy this code, because Bootstrap is nothing but to take some ready-made code from Bootstrap and make changes in it. Okay, so I'll just create navigation bar. Okay, so let's take an example. Let's go live. This will look like this, but I don't want to look like this. Why? Because I want to add CSS for it. Okay, so I'll quickly add style.css. So this is nothing but the external file of CSS. So I want to give body. I'll give background image to this. So first my motive is to give background image. So I'll give font, sorry, background image, linear gradient. So what I'm doing now, I'll tell you. I'll quickly complete this. I'll copy this for 3 times. And then give the URL over here. So this URL is nothing but image. We add image over here. So I'll create all files inside image. Okay, now it's /images, and I will click first image and say. So this is nothing but we can set background image using background image attribute. Linear gradient is nothing but I want black color in opacity. Opacity is nothing but आपका जो बैकग्राउंड है वो क्लियरली नहीं दिखता है, उसके आगे एक कलर ऐड हो जाता है. सो फिर से गो लाइव करना पड़ेगा कि फाइल का डेस्टिनेशन गलत था, बहुत एरर आते हैं. नो बैकग्राउंड इज देयर.
I have image1 dot jpg file. Why is this? Because I have not included CSS file. So link, I'll quickly add style.css file in this. Click save किया. थोड़े से और चेंजेस करते हैं. मिनिमम हाइट रखते हैं इसकी एज 100 VH वर्टिकल हाइट. तो बैकग्राउंड रिपीट नहीं होना चाहिए. एक ही बार मेरा बैकग्राउंड मुझे चाहिए. सो देन आई क्विकली ऐड नो रिपीट. देन बैकग्राउंड पोजीशन दे रही हूँ मैं एज सेंटर. बैकग्राउंड साइज एज cover. पोजीशन रिलेटिव. ओके, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है. We add all things correct. Images. I'll quickly go again on live server. Something went wrong. Let's change this as index. Okay, then we'll overview this. Let's navbar. Nav dot nav. This all are nothing but class name that I've specified. Nav link and then color. Yes. But what is the problem for body? No. Okay, so let's change the color of navigation bar as we can make navigation bar fixed top. Then make navigation bar darker. If background is transparent, but in our case, there is no background image is loaded, so that's why this error is occur. Okay, so this color is white, so let me change the color of it. And you can see navbar color is also white. So I'll quickly change it.
Then we'll check that are responsive or not. I'll check it. So yes, it is responsive, but this is in white in color, so that's why we cannot see it. Let's quickly fix it. This will create a problem. Yes. So this is nothing but navigation bar. So I want to add two buttons inside it, login and sign in. So let's quickly add these buttons manually. So to navigation bar, we create form tag. Okay, form tag. Its class name action is nothing but to go to the other page on submitting the form. So this is nothing but the use of this action. Then we quickly add class deflex. Okay, and then quickly add some style over here because I don't want to add that much of style. So left and auto. इससे क्या होगा that your page login and sign in button should be move left. That means on this side. On this side, your sign in and login or sign up page will be displayed over here at the left. So I'll quickly add button class should be button button. This is nothing but the bootstrap. Okay, whatever I've used over here, button MD, this is nothing but bootstrap, or you can say LG, LBG body, navbar light. So what is the benefit of the bootstrap is nothing but अगर हम स्टाइल इस क्लास को क्लास का नाम तो दिया ही है पर बार बार स्टाइल में जाके हमें इसका कलर चेंज करना पड़ता है या फिर कुछ और स्टाइल्स इसको ऐड करनी पड़ती है तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप आपको चांस देता है कि आप यहीं पे कलर डिसाइड करो या डार्क है या लाइट है वॉट एवर एल जी इज नथिंग बट लार्ज expand large. This all things are bootstrap things. Then all I'm using over here is also bootstrap. I mean, this is nothing but margin. Nothing happened because I have not created anything. Like I am created a href. I want to create login. So I want to navigate to login.html page. When I click on this login button, then I'll give quickly style to it. Text decoration as none because it will add dashed or underline to my text as like we previously see Google. None. Then I'll add login here. Login. Let me first create this color of text is black. And then save it. Nothing has happened. Okay. Yeah, this form should be inside nav. Yes. So we get login. So we get this login button.
लॉगिन अभी तक हमने बनाया नहीं है, तो वो लॉगिन को नेविगेट नहीं हो रहा। I'll add again this same button inside this form as a sign up. Okay, quickly add. All these things are same. Just give hash sign up because I am creating this page inside one page. Okay, मतलब साइन इन और लॉग इन जो पेज है हमारे, वो एक ही फॉर्म में हम रखेंगे, इसीलिए मैंने वो हैश साइन अप दिया है। आगे जाके समझ आएगा क्या कर रहे हैं हम। ओके, सो ये साइन अप भी आया और लॉग इन भी आया हमारा। ठीक है, सीएसएस में भी थोड़े से चेंजेस कर लेते हैं। कलर दिया ब्लैक। देन डॉट बटन। बटन ये हमारा क्लास है, मैंने पहले भी बताया था दैट दिस बटन इज नथिंग बट माय क्लास नेम। कैन दिस इज नथिंग बट द बूटस्ट्रैप। दिस ऑल थिंग्स आर बूटस्ट्रैप थिंग्स। style1.css button. Inside button, I'll give background color to button as RGB. So this RGB is nothing but specify amount of color of red, green and blue. So I'll 123 226 226. I think this is the color. अभी तक कुछ हुआ नहीं इसमें. So let's button over peachy color, background color. Again, I'll use RGB. Red is 60 to 484. Colors change, but something went wrong. So let me quickly check this. So I've previously created this. Let me check what is going wrong. Okay. All these things are seems to be okay. Okay, let's move ahead. Login.html. We create login.html. Login. Inside this, and I'll quickly add so let's see. So it will navigate to login. Let's check it's really navigate.
Hello, quickly check. Okay, so next I'll add one script over here, that is jQuery script, which is very important for JS. So I'll मैंने पहले ही ऐड किया था, उसको कॉपी पेस्ट किया था, ये यूज में आने वाली क्योंकि जेस की फाइल jQuery आगे काम आने वाली है. Div box. I'll give class name as box. Okay. Then I want to add logo. So I'll use image tag over here, and inside image src logo dot slash, I'll forget about slash dot images dot slash images logo one dot png. Let's hope this image will display it. Let's quickly add some few styles. Border radius as 100. So that's why it will let's create this page first and then see what is the problem in linking. So at least this image is showing. Okay. So first quickly add HTML in it and then go towards the CSS. Quickly first add whatever the code is, then we'll see other things like CSS का भी हम बाद में देखेंगे, पहले हम टाइप करके देखते हैं. Let me add a link for login button now. The ID should be login. So this will be useful in CSS. Class should be active. Active is nothing but we are currently on that page. That is why we make this as active. Then I'll add href hash login. So we cannot create login. So login form. So quickly create it. Then specify name as login. And then same for sign up. Okay. Copy, paste. Here I'll specify sign up. Don't make it active. Let's make ID as a sign up. Hash login. Sign up. Let's see. These two pages are, these two links are created. We give CSS after that. Okay. Oops. Leave.
देन आई ऐड div. इसका मीनिंग आपको थोड़ा सा बाद में पता चलेगा क्योंकि ये जेएस का यूज है इसमें, तो हम जेएस भी देखेंगे आफ्टर इट. id is equal to error message. Okay, then make another div. Let's make a class content and then create a form inside it. फॉर्म में एक्शन नहीं देनी है अभी, आईडी देना है. फॉर्म्स, quickly add id as a forms not form. Class as login. The class name is login. Your id name is login and your class name is login. Okay, then quickly add name of this is login. Login form. And then here I'll add on submit equal to return. So this is nothing but J's part. Validate login form. So this is nothing but a function we can create inside JavaScript file. So first we can create these files. जावास्क्रिप्ट में इसमें क्या होता है कि ये ट्रू वैल्यू जब तक रिटर्न नहीं करता है तब तक फॉर्म सबमिट नहीं होता. व्हेनेवर ट्रू वैल्यू इज सबमिटेड and save inside this on submit, then and then this form will be submitted. Okay, and just give method as post. Method post is nothing but जब हम कुछ लॉगिन या कुछ करते हैं तो यहाँ पे हमारा यूजर नेम और पासवर्ड दिखता है जब हम गेट मेथड यूज करते हैं. बट व्हेन वी यूज पोस्ट मेथड दिस information or private information should be hide from user. Okay, then inside form I'll quickly add input class as form. Okay, form type is text, name is name, id is log name. Okay, because this name are used in JS. Log name and then placeholder as username. तो यहाँ पे यूजर नेम आ गया. CSS की नहीं है इसकी वजह से ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, बट जब हम CSS ऐड करेंगे तो ये प्रॉपर दिखेगा. Another input class should be forms. Then I'll quickly add type as password. So type password means nothing but to whatever we write inside that text box should be hidden from the others. Name as password, ID as log password, log pass. Give placeholder as password. I'll quickly save this. Okay, so see the difference between these. Okay, so this is nothing but the type text password and this is normal text. Okay, so moving ahead using break tag once
So it will quickly add space for our file. Sorry, our so now next put as a submit. Type is submit and value is login. Okay. Value is login. Quickly make a href login.html. So whenever we click on this login button, login.html will be created. Okay. So login.html is done. Now this is login. Now we are creating form of sign up. So this will be sign up over here, not login.html, because we specify login.html above. Okay. Quickly add style over here. Font size as 15 pixel. Forget password. User is forgetting the password, then it will navigate to the sign up page. And then we'll quickly end of form tag. Okay. So we cannot create it. So I'm missing. Okay, this div is completed. So as we have time limit, I'll quickly add this code, div code for login and sign up button, and quickly add this file. So this form is created. Two forms are created. Coming to the style.css file. I'll quickly copy the styles from here. So let me tell you that whatever I am copied, I'll explain you in short quickly. So first is box. Box is nothing but the class name for a div in login page. So box. So this class name should be box. So we can create this styling for the box. Okay, so this width is 380 pixel, height is 450,
background color, then padding. We can add padding over there. Padding is nothing but to add space inside the element. Margin is nothing but to add space outside the box or outside the element. Then margin, we can add margin over here. Then text align is center. Position is relative. Box sizing is nothing but to whatever the size of the box is, border box, and flex direction comp. Then this is a box image. So this is nothing but this image. We can create styles for this image tag. So the image width is 100 pixel and image margin top is minus 50 pixel. So that's why it will be, there is something problem in CSS file, I guess. Yeah, I've never had a CSS file over here. That's why. Link file.css. I hope. Yeah, this is the page. I think some issue with the background image. So that's why the styling is not visible, or page is still like a skeleton. So header, this is nothing but this div tag, or this div tag's class name is header. So we style this header as it includes login page, login and sign up. Okay, so this login and this sign up. Okay, so we can style to the header. Width and height should be 350. Text transform is uppercase. Display is inline flex. Then we add some padding. Then padding bottom should be 0. That means no padding should be added to the 0. Justify content space between. So we need space inside, space in between these two elements. These two header, that is login and sign up. So header में जो a tag है, ये इसको स्टाइलिंग कर रहा है. तो that is nothing but this font size should be 20. Text decoration none, color दिया हुआ है. Then padding 25 pixel left दी है, right दी है. And justify content center. So the content should be in a center and cursor should be pointer. So this is not even the pointer cursor. And this is not a pointer cursor, but this hand, a finger is called a pointer cursor. तो देन आई हेडर एक्टिव, जो एक्टिव है, जिस क्लास का नाम हमने एक्टिव दिया, दिस नथिंग बट एक्टिव. So this should be colored in this. Its color should be this. Its font weight should be bold and position should be relative. Header active after. Position absolute दिया हुआ है, border none दिया हुआ है. Okay, and then error message. This error message is nothing but when we click on this submit button. So some links are getting misused. So when we cannot fill these pages, then we'll get error. So that error message should be printed inside this red color. Its text align should be center, its font should be 12, and padding bottom should be 20 pixel. Content is nothing but inline flex, so it display inline flex. Overflow should be hidden. So these two forms are shown whenever we click on its buttons. Okay, so this is nothing but overflow should be hidden. So at a time only one form should be visible. So this is the forms, whatever ID I have created over here, this forms, ID forms. So I have styling that position is relative, display inline flex, in straight,
Height, width should be 100%. Then flex direction is in column. Transition right 0.5 pixel, 0.5 seconds. Border should be none. So the border of this text area should be nothing. I don't want the border of this text area. So there should be nothing. Border radius is 50%. So dot login A. So login class. This is the login class. And this class A. Inside this A. So where is login class? This is the login class and login class A inside this login. मतलब वो जो लिंक है उससे हम स्टाइलिंग कर रहे हैं. टेक्स्ट डेकोरेशन एज नन, color as F white, then font size is 10, text align is center, cursor is pointer. Okay, so this is nothing but the pointer cursor we should give to this button. Then this is nothing but we can give input to the form, which is nothing but whatever जो हम कुछ भी इनपुट टेक्स्ट में देने वाले हैं या फिर पासवर्ड में देने वाले हैं या फिर ईमेल देने वाले हैं, उसकी जो टेक्स्टिंग है वो सेम है, वो सेम करो या सेम रखो. तो इसके लिए हमने ये एक साथ इसको यूज किया हुआ है इनपुट टाइप्स को. डिस्प्ले ब्लॉक, पोजीशन रिलेटिव, पैडिंग 12 है, बॉटम मार्जिन सेट क्यू है 15, विड्थ 100%, then font size should be 17 and I don't want a border, so I'll don't want any border, so it should be none. And border radius should be 25 pixel. Okay, border radius means this border should be 25 pixel. Input type text hover. ये जो मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, यहाँ जा रही हूँ, ये होवरिंग है, उसका कलर सेट किया हुआ है. दैट कलर शुड बी सेट एज दिस लाइट शेड. Then input type submit. So whenever we submit the form or input type should be submit, the block or the styling should be of that type. Then input type submit hover. So this hover color should be dark violet. This, and background color is this light purple. Input type checkbox. So the checkbox color should be, we have not included the checkbox, so we can make it, so we can delete this section. So this is how the CSS and HTML works, login page. But there is something problem with links. So let me quick overview what is the problem. First, we create this header for login and sign up. So content forms, something is not going correct. Because see, when I click over here, it should say that there is no page, or sign up form is also not getting proper response.
quickly check what is the issue. Yeah, that's also correct. I think I should go with this all once again. If I see something went wrong, कुछ तो गलत है. So I'll quickly add style also. Check once. But sign up page gives me error. Class sign up. Okay. I think its class name should be forms. ID no. अरे CSS से change हो जाएगा. So something went wrong over there. So let's proceed with this code. I've already generated. This is quite simple and nice. So when I type username and password, click on login. Your password must be of 8 characters. So I'll add some. This should be login successful. Okay. So how this messages get popped up. Okay. So let me show you and just quickly telling you that we have index.js file also. So in this file, we add all JS. So in this login form where we add this valid login form, this is the function which is used over here. Okay. So this function, inside this function, I've add two attributes, name and password. Okay. When document.getID log name. So we have mentioned log name over here, which is the ID of it. Okay, so this ID should be get by the JS, and then dot value is nothing but its value. So whatever user will enter the value should be get in this name and password. Same with the password. So ये क्या कर रहा है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये जो आईडी है उसकी वैल्यू आपको रिटर्न कर रहा है. अगर मैंने कुछ यूजर नेम दिया गौरी24 तो वो इस नेम में होगा और पासवर्ड कुछ मेरा एक्सवाइजेड होगा तो वो इस पासवर्ड में स्टोर होगा. एंड देन इट विल चेक दैट द पासवर्ड और अ नेम शुड बी एम्प्टी. इफ दिस इज एम्प्टी, अगर एम्प्टी है तो फॉल्स रिटर्न करना है.
एंड एरर मैसेज भी देना है। तो हमने एक एरर मैसेज का मैंने बोला था कि एक div है, तो that div is nothing but the section where this message is printed. Please fill the required fields. This message is printed on that. So we get the message here, like, oh, like this. When I click login, so it will give me error that 8 characters. So that error should be written, detected, and it will return false. So this false value should be written in this on submit, and the form submission will fail. Okay. And then else if password dot length less than 8. So it will take the length of the password. So it should be less than 8. Okay. And if it will be greater than 8, then it will okay. But it should be less. If it is less than 8, then it will return false and give the error message as your password must include 8 characters at least. So if both of these conditions are not true, then it will go to the else part, create alert message. Alert is nothing but whatever pop-up we have seen over here. I think I have not included, but this is the error message we get in the middle. So whenever we click, we see login successful message. With the help of this alert message or alert, then we'll return true. Another validate sign in form. So this form should be for sign up. Okay. So on submit return validate form. So it call this method validate form sign up form. Then वेरिएबल मेल. सो मेल वेरिएबल का हम एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है या आईडी से जो उसकी वैल्यू आ रही है वो स्टोर कर रहे हैं मेल में. वेरिएबल नेम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी साइन नेम. So that name of this name sign name should be stored here, and password will stored over here. So these two fields are same as login, but this mail is unique, or mail is new because it is a sign up page. So it will check three of this mail name and password that it is empty. If it is empty, then it will return false and give you an error message as please fill the required field. Else if पासवर्ड अगेन चेक करेगा कितना है कितनी लेंथ है उसकी. अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा एंड एरर मैसेज भी देगा एज योर पासवर्ड मस्ट इंक्लूड एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स. एंड एट लास्ट if all the fields are fulfilled, then successfully signed up. So this is nothing but all form is. I hope you guys understand. थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है पर अभी so would you guys understand? Hello.
Have you guys any doubt? Guys, are you getting some knowledge from me? पे हो गया है हमारा वेबिनार अभी. Have you understood? I know some issues are there in my files, or some file locations are not correct, but I hope I am explaining you as well as I can. In my message, okay, if you have any doubt, please comment out. I'll check. So, advanced key technologies is मतलब रिएक्ट जेएस आप सीख सकते हो. रोड मैप ही चाहिए तो आपको वेब डेवलपमेंट का रिएक्ट या एंगुलर दोनों भी सीख सकते हो. But this in this session I'll take any all the things very basic. तो पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए, उसके बाद एडवांस. You can also use bootstrap. Clear, Jitesh? Are you getting some new knowledge or new things from this webinar? बैकएंड में MySQL यूज कर सकते हैं, PHP यूज कर सकते हैं. तो ठीक है. थैंक यू. Hope you are doing well. So all the best for future. Yes, you can use MongoDB in backend. So okay, we can stop here now. Okay, so please check YouTube channel for this webinar videos. And I'll also share this source code to you.
थैंक यू सो मच गाइस, बाय।